Hello student, this is Rohan. Welcome to our YouTube channel Smile Education Point. तो बच्चों आज हम कक्षा 7वीं के डीएवी पब्लिक स्कूल के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जब रैशनल नंबर को पढ़ते हैं उससे पहले उसका थोड़ा थोड़ा जो बेसिक टर्म्स है, the basic terms of rational numbers we are going to study in today's class is whole numbers, natural numbers, fractions, decimals, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके थे क्लास 6 में। तो बच्चों आज हम रैशनल नंबर जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर कक्षा 7वीं का पहला चैप्टर जो है रैशनल नंबर, तो बच्चों उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों बिफोर knowing the term rational number, we have to understand what are the basic terms, what are the basic things which constitute rational number as a whole. So student will study some basic terms before going to the topic rational number. So student will study in earlier class. You have studied in class 6 that there are natural numbers, whole numbers, integers, and etc. So first of all we have to study the term or natural number. So what do you mean by natural number, students? So first of all, before going to the topic rational number, we have to understand what is a natural number is. So student, the first thing is natural number. The first thing is natural numbers. What do you mean by natural numbers? Now students, all counting numbers excluding 0 are termed to be as natural numbers. So student, natural numbers, we can define natural number as all counting numbers. In simple words, we can say that all counting numbers excluding 0 नहीं आएगा। जैसे हम बोलते 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उसमें 0 को एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी उसमें 0 को हम नहीं लाएंगे, उसमें काउंटिंग नंबर ही आएगा। तो बच्चों उसका सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ? अगर हम साधारणतः बोले तो all natural numbers excluding 0. First of all, when we study any topic, whether it is mathematics, economics, or SST related subject, or any subject, we first of all want to describe, we have to describe in our words. Then we'll write in exams or in papers. First of all, we should know the meaning of that term or words. In mathematics, what we should do now, we should first of all know the meaning of a particular term or particular word before solving math, before solving the equations, the expressions. So students, natural numbers, as I have said, that natural numbers are those numbers which are counting numbers, or we can say all counting numbers excluding 0 are known as natural number. So what is the definition of natural numbers? The counting numbers excluding 0, excluding
हम पढ़े हैं ना एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यानी when we say including that means we include it, when we say excluding that means we exclude, हम बाहर निकालेंगे उनको अथवा उन्हें नहीं लाएंगे. जैसे for examples we can say that examples of for examples we can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 6, 7, 8, 9, and 10. 10, etc. and etc. यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स से हम उन्हें नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, कहेंगे. सो स्टूडेंट व्हाट वी गॉट ना, व्हाट आई सेड ना, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो. In this term, in this expressions, zero is not including. Are you getting my point, students? We are not including zero. So natural numbers, जो numbers जिसमें जो natural number उन्हें कहते हैं जिनमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते, अथवा जितने भी काउंटिंग नंबर्स हमारे हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है. Have you got my answer? Have you got it? So students, now we'll study natural numbers. We have studied natural numbers. Now we'll study whole numbers. Let me represent in a number line. So this is a number line. Let's say this is a number line. So 1, ये आएगा 1, 2, 3 and 4, 5, 6 and etc. etc. So a number line has a wide length, it cannot be reduced. So for instance, let's say for example we say this is a number line. Are you getting my point, students? This is what natural number is. Now we'll study whole number. Now we'll study what do you mean by whole number, students? What do you mean by whole numbers? When you try to study on a certain topic, especially a math, you should understand. Then you will do the necessary things. So secondly is whole numbers. Let me say whole numbers. What do you mean by whole numbers, students? Whole numbers means whole numbers is opposite of natural number. Whole number is opposite of natural number. We have studied that natural numbers are those numbers which are counting numbers excluding zero. Again, we will add this definition in whole numbers. What we add now? Let's simply in simple words. We have to understand in simple words. Then we use mathematical terms, mathematical techniques to describe a particular definition, a particular word. So whole number. What do you mean by whole number, students? Now whole numbers are those numbers, all counting numbers including zero, along with the negative integers, along with the negatives, is known as whole numbers. So whole number in simple words, all counting numbers including zero along with their negatives are known as whole number. So we simply describe it, or we simply can say it as natural number, natural number, natural number, natural number with along with zero, along with zero and the negatives. Have you got my point? Have you? So whole numbers are those numbers which
All counting numbers including 0 along with the negatives are known as whole number. Have you got my point, students? So this is all about natural numbers and whole numbers. Are you getting my point, students? So we studied natural number and whole number. Now let represent it on a number line. For example, I haven't wrote the examples like 0. These numbers starts with 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. And so on, etc. We can say that all natural numbers are whole numbers. This is a point to be noted. This is a point to be noted that all natural numbers are whole numbers. All natural numbers, N for natural, N for numbers. All natural numbers are whole numbers. Are you getting my point, students? All natural numbers are whole numbers, but there is but. All whole numbers are not natural numbers. All whole numbers are not natural numbers. Are you getting my point? This is a point to be noted. You should note this point. All natural number, that means all this is a natural number, this is all counting numbers. We can say that all natural numbers are whole numbers because its whole number starts with 0 and natural number starts with 1 because it is a counting number. So all natural number can be whole number, but all whole number cannot be natural number. You should remember this point. Are you getting my point? So now we'll study fraction. What is a fraction is? What is a fraction? Third number is fraction. We simply say having denominator and numerator. Numerator and denominator. Which one is numerator and which one is denominator, students? This is numerator and this is denominator. In a fraction, there is numerator and denominator. Are you getting my point, students? In a fraction, there is two things. One is numerator, another one is denominator. The upper one of the fraction is numerator and the second one is denominator. Are you getting my point, students? So fraction is a part of a whole is a fraction. A part. That means this is a part of a whole. Part of a whole is a fraction. Are you getting my point? A part of a whole. That means what the definition of fraction? Now try to understand, students. A part. This is a part. This is a chapati. Let's say this is a chapati. What you eat in breakfast. This is a chapati. And from that chapati, you have eaten this part. You have ate this part. That means this is a part. This is a whole part. A part of a whole. Are you getting my point, student? This is a whole part and this is a one part. It entails that a part of a whole. That means it is a fraction. So fraction is the ratio of two natural numbers. So what is fraction?
Now fraction is the ratio of natural numbers. Fraction fraction each fraction is the ratio of whole numbers. Ratio of whole numbers. Are you getting my point, students? Fraction is a part of a whole. I told you na. So let's say this is a chapati and you have eaten a small part of it. It may be like this, it may be like this, it may be like this, it may be like this. So you have eaten a part. That means a small part from that chapati. चपाती मीन्स जो हम रोटी बोलते हैं, रोटी. अब रोटी खाए हो, रोटी. तो उस रोटी में से जब आप बच्चे उस रोटी में से किसी भी छोटे से पार्ट खा लेते हो, इतना सा हो, इतना सा हो, जब उस पार्ट से, उस होल पार्ट से, होल यानी एक कंप्लीट को बुझा समझाता है, तो उस होल में से जब आप एक छोटे से पार्ट को खा लेते हो, उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन. तो उसे मैथमेटिकली हम फ्रैक्शन बुलाएंगे या फ्रैक्शन बोलेंगे. समझ रहे हो बच्चों? अ पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इज अ रेशियो होल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल 1/2, 3/4, 2/4, 3/4. These are the fractions. Are you getting my point, students? These are all called fraction. So we studied fractions, whole numbers, natural numbers. Natural numbers are those numbers which are counting numbers excluding zero. अगर हमें बोला जाए कि डेफिनेशन बोलो उसका, स्कूल में पूछते हैं ना बच्चा, इस टर्म का, इस विषय का, इस वर्ड का डेफिनेशन बोलो. देन यू विल से ना all counting numbers excluding zero is known as natural number. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. and etc. Then the teacher will ask you what is a whole number. Then the whole numbers, all natural numbers including zero along with the negatives are known as whole numbers. For example, 0, 1, 2, 3, 4. Then fraction is a part of a whole, or we can say it is the ratio of natural numbers. For example, 1/2, 3/4, 6/4, 5/4. These are the fractions. So student, now we'll study the properties of fractions. We have studied now what is a fraction, student. A fraction is a part of a whole. Suppose let me explain again. This is a whole part and this is a part of a whole. So a part of a whole is a fraction, or we can say it is the ratio. It is the ratio of, ratio means this is ratio. P is to Q. That means 1:2. 1:2 is equal to 1/2. So a part of a whole is a fraction, or it is the ratio of natural numbers. Have you got it? Now we'll study the properties of fractions. What are the properties of fractions, students? Now, when we study fractions, we have studied that there is ratio. Again, I want to repeat it. This point, the upper one is known as the numerator, and the lower one is known as the of a fraction. The upper one
of the upper number of the fraction is known as numerator and the lower one is known as denominator. Have you got it? The upper part of the fraction is known as numerator and the lower part of the fraction is known as denominator. This is a term to be remembered. So now we'll discuss the properties of fraction. So students, now we will study the properties of fractions. What are the properties of fractions? So students, now we'll study the properties of a fraction. What are the properties of fractions? So before knowing the properties of fraction, we should know what are fractions. I have tell you that fractions are a whole of a part. It is a ratio of natural number. So properties of fractions. First property says that if p and q is a fraction, then for any natural number n, p by q is equal to p into m divided by q into m. Suppose let's say any fraction, let's say 1 by 2, in the place of p we take 1, in the place of q we take 2. So in this properties we will see what the property says. The property says if p and q is a fraction, then for any natural number n, then for any natural number n is equal to p into m divided by q into m. That means 2 into 3. So here 3 is common. So 1 3s are 3, 2 3s are 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 1 by 2. It comes 1 by 2. Are you getting my point or not? This is what the first property says. The first property says if p and q is a fraction, then for any natural number m, p by q is equal to p into m divided by q into m. So here p is equal to 1, q is equal to 2. So 3 is common. So 1 into 3. So 3 is a natural number. We know that all counting numbers are known as natural numbers. So 3 is a natural number. So we multiply 1 into 3 is a 3, 2 3 is a 6. 3 by 6 is equal to 1 by 2. Hence proved. So this is all about first property. So second property says if p is a fraction and q is a natural number, m is a common divisor of p and q, is a common divisor. We know that in class 6 or class 5 we studied, you will study divisor, dividend, quotient, remainder. You will know na. So with this we will know what the second property says. The second property says if p and q is a fraction and a natural number m is a common divisor, and then m is a common divisor of p and q, then p and q is equal to p divided by m and q divided by m. Let's say 1 by 2. 1 by 2 is equal to 1 divided by 2. 2 divided by 2. 2 is common. M is a natural number, so 2 is also a natural number. So 1 divided by 1 2 is a 2. 2 1 is a 2. 2 by 1. Are you getting my point or not? Or we can take here 1. We can take here 1 or any number. Any number we can take. That may be natural number, that may not be whole number or another number. So it may be natural number. So
Let's see. 2. 2. Let's take 2. 1 2 ja 2. 1 2 ja 2. 2 1 ja 2. So 2 by 1. So then P by Q is equal to like this. Are you getting my point, students? So now we'll discuss the third property of fraction. Third property of fraction. What the third property says? Now, two fractions P by Q and R by S are said to be equivalent. These two terms are said to be equivalent if P into S is equal to Q into S. If we have studied now, if LHS is equal to, if the LH is equal to RHS, then it is equivalent. Are you getting my point or not? So this says the fractions of P by Q and R by S are said to be equivalent if P into S and Q into R. P into S and Q into R. That means let do it. P by Q into it is said to be equivalent R by S, in which case if P into S is equal to Q into R. Are you getting my point or not? This is the third property. So now we will study the fourth one, the fourth property of D. What D says? Now fraction P by Q is said to be in simplest or lowest form if P and Q have no common factor other than 1. What does it say? It does says that a fraction P by Q is said to be in simplest form or lowest form. Simplest form or lowest form if P and Q have no common factor other than 1. Are you getting my point? If fraction P by Q is said to be simplest or lowest form. If fraction is said to be in a lowest form if the common factor is 1. एक से एक ही उसका कॉमन फैक्टर होगा, एक को छोड़कर और कोई भी नंबर उस फ्रैक्शन का कॉमन फैक्टर नहीं होगा. समझ रहे हो ना बच्चों? वही बोल रहा है. फिर E says fractions can be compared. Fractions can be compared like this. P and Q is lesser than R by S. In that case, P into S is lesser than R into S. Are you getting my point or not? If the fractions can be compared, when we compare these fractions, if let's say if P and Q is lesser than R by S, then in that case what happened? Now P into S is lesser than Q into S, R into S. P into S is lesser than R into S. R into sorry, Q into R. Sorry. Q into R. Q into R. So first fraction says if P by Q is lesser than R by S, then in which case P by Q and P by Q is lesser than R by S. In this case, now if P into S is lesser than, if we multiply these and we multiply this one, if we did cross multiplication, after doing the cross multiplication, if P into S is lesser than Q into R, then P by Q is lesser than R by S. Have you got it? Then again we say
if P by Q is equal to R by S, if P into S is equal to Q into R, in that case P by Q is equal to R by S. Are you getting my point or not? If P into S is equal to Q into R, then P by Q is equal to R by S. Are you getting my point or not? Then third one, if P into S is greater than Q into R, if P into S is greater than, this is greater than symbol, this is lesser than, this is greater than symbol, sign, greater than, this is lesser than, this symbol or sign is lesser than. So it says that if P into S is greater than Q into R, then in that case P by Q is greater than R by S. Have you got it? So first property we studied. Now if P by Q is a fraction, then for any natural number P by Q is equal to P into M divided by Q into M. Secondly, we have studied if P by Q is a fraction and a natural number M is a divisor of P and Q. M is divided with these two terms. It says M is divided with these two terms. Here M is divided with P and Q bothly as a whole. Are you getting my point? Then P by Q is equal to P divided by M or divided by Q divided by M. So this is all about properties of fractions. So students, now we'll simplify some maths according to fractions. So first question is, the first question is minus 1 212 202. तो बच्चों पहला क्वेश्चन है -212 प्लस 384 माइनस होल इंटू -3137. तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम जानते हैं, पहले 5-6 क्लास में बॉडमास का जो रूल था वो पढ़े थे. बॉडमास B4 क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, उसके बाद बॉडमास जो रूल होता है बच्चों वो क्या होता है ना, तो बच्चों मैंने कहा ना बॉडमास रूल के अंडर हम पढ़े वो सॉल्व करेंगे. पहले B4 क्या होता है? ब्रैकेट. B4 ब्रैकेट. हम पहले एक मैथ को सिंप्लीफाई करने से पहले उसका ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें आने वाले ऑफ, ओ फॉर ऑफ. B4 क्या होता है? डिवीजन. समझ रहे हो ना बच्चों? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन. M फॉर मल्टीप्लिकेशन. M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों. उसके बाद A फॉर एडिशन, ऐड करेंगे एडिशन. उसके बाद सब्सट्रैक्शन. तो बॉडमास का फुल फॉर्म क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. पहले हम ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे. तो क्या होगा ना बच्चों, पहले क्या सॉल्व करेंगे ये वैसे ही रखना है इसको. सॉरी 212 प्लस 384 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा. हम पढ़े ना जब
माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये वाला थोड़ा लिख लो बच्चों, यह भी इम्पोर्टेंट है। एक जब हमारे साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। जब नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, वो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। जब एडिशन का सिंबल साइन एडिशन के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। और जब पॉजिटिव का साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, वो नेगेटिव ही आएगा। तो क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला याद रखो। उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, माइनस पर उसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 137। तो यहाँ पर हमें इसको प्लस प्लस कर देंगे। तो इसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा उसको लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप नहीं समझ पाएंगे कैसे हुआ। तो बच्चों क्या होगा ना, 7 11, 11 से 1 उधर जाएगा 1, नहीं 137, सॉरी 11 से 1, 7 8 9 10 11, 11 से यहाँ पर 1 रुका, वहाँ पर 1 गया, हाँ 1 गया, 11 1 12, 12 1 5 5 2 1, कितना हुआ 5 2 1, सॉरी 6 5 5। तो इससे हम किस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 से 5 2 1 से 2 1 2, जब माइनस प्लस माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, यहाँ पर माइनस ही होगा, समझ रहे हो ना बच्चों, यह माइनस ही होगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन हम साइन खोल देंगे, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 प्लस 5 2 1, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो प्लस होगा, तो प्लस 521 से 212 जब हम माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, 212, हाँ जब हम 212 से माइनस करेंगे, तो बच्चों ये कैसे लिखा जाएगा ना, 309, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो हाँ माइनस ही होगा, तो वही माइनस रखा जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट को हटाया जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हट गया ब्रैकेट, उसके बाद तो उसका आंसर होगा 309, समझिए बच्चों 309, हाँ 9 10 11 12, हाँ ठीक है 309, ये था पहला क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को बच्चों। फिर अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरा किसका, तो देखो बच्चों 2 नंबर का, -9 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस होल इंटू 11 -11
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको रहने दो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह लेंदी बना रहा हूं, ठीक है। तो 7 प्लस माइनस माइनस, तो ब्रैकेट हट गया। 11 से 7 जाएगा तो कितना रहेगा? 8 9 10 11, 4 9 9 6 36 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस, हाँ 7 से अगर 11 जाएगा तो माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया तो 36 होगा इसका आंसर। समझ में आया बच्चों? समझो थोड़ा, ब्रैकेट थोड़ा समझो, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर क्या है ना बच्चों ना, -12 इंटू -10 इंटू 6 इंटू -1। तो इससे किस तरह सॉल्व करेंगे ना, 12, हाँ 12 इंटू 10 120, 120 प्लस प्लस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। इसका आंसर होगा 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 2 1, 6 1 जा 6 1 7 माइनस 1 7 0 माइनस 1 7, सॉरी माइनस 7 2 0, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 12 से 2 यहाँ गया 1, 7 720। उसके बाद हाँ -720। उसके बाद हमारा 4 नंबर, 4 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? देखो 108, 108 -108 डिवाइडेड बाय -12। तो हमें इसको इस तरह लिख सकते हैं, 108 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस साइन कैंसल, 12 9 जा 12 जा 12, 12 9 जा 108 इज इक्वल टू 9। इसका आंसर होगा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, इसका आंसर 9 होगा। समझ में आया बच्चों? माइनस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद लास्ट 4 नंबर गया 5। अब हम 5 नंबर का सॉल्व करेंगे। देख लो बच्चों 5 का क्या है ना, 1 3 3 1, 1331 डिवाइडेड बाय 11। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1331 डिवाइडेड बाय 11, 122, 11 3 हाँ यहाँ पे प्लस साइन है, याद रखो जब इसमें कुछ साइन ना हो आपको मान लेना है ये प्लस ही साइन है, ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर होगा 1 2 2 122, 122 नहीं 122 नहीं, 11 1 जो 11, हाँ इसका आंसर 122 ही होगा। समझ में आया बच्चों?
तो बच्चों नहीं नहीं, ये वाला गलत हो गया, गलत हो गया मेरा, 1 2 1 होगा, सॉरी, 1 2 1, 1 2 1। ठीक है बच्चों, -1 2 1, क्योंकि प्लस से, ठीक है, डिवाइड हो रहा है या ना, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये माइनस होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। 11 1 जा 11, 11 2, 11 2 जा 22, 22 से हाँ, 11 1 जा 11, 1 2 1 माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, मैं थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 2 1। हो गया ये वाला। अभी हम लास्ट वाला 6 नंबर वाला करेंगे। ठीक है बच्चों, 6 नंबर वाला, 6 नंबर। तो बच्चों क्या है ना, देखो, -72 होल इंटू -15 -37 एंड -18, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे ना, देखो बच्चों, -72, तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो ग्रेटर होगा, यह ध्यान रखना बच्चों, अगर एक इक्वेशन में जिसका साइन जो नंबर बड़ा है, वही उस नंबर के आगे जो साइन लगा होगा वही साइन हम रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 40 40 40 45 46 47 48 49 50 51 52। तो -52 -18 -52। हाँ, तो यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे इसको ना, देखो बच्चों, -72 यहाँ पर माइनस ही साइन होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ही साइन होगा, तो -70। हम यहाँ पर कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर होगा 5040। ठीक है बच्चों, हाँ, 5040, इसका आंसर होगा 5040। तो देख लो बच्चों, और क्या क्या आप लोगों का डाउट है। यहाँ पर जब भी आप लोग बच्चा ब्रैकेट को सॉल्व करें, उससे पहले यह वाला ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो सॉल्व होगा वो सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, तो यह था उसका आंसर। आई होप बच्चों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा, आप सभी बच्चे उस वीडियो की जानकारी आप लोगों के पास पहुंच सके। इसके साथ विदाई लेता हूं। धन्यवाद।